Morning to all of you. Akash, audio, video, everything clear? Right. So today's class is very much important because UPSC generally pick questions from this part. Okay, they select questions from this part, that is land revenue policies. This year also a question was asked from this chapter, but it was easy. Okay, so we should prepare ourselves for the most difficult questions, right? Then easier questions will be in our ambit. Okay, and one more thing. Okay, there is one student Rohit who is in our class and he missed a few classes, so he asked me that please share me the contact number of Akash or Girish, any student Vipin who is regularly attending the classes. So I think that those who are regularly attending the classes here, okay, I will make a WhatsApp group for those students, okay, who are regular here, okay, and you can share your notes and all this. Okay, so I will do it, but for this those who are regularly in class, just send me a message. ठीक है, तो मुझे ध्यान आ जाएगा. ठीक है ना आकाश? Just send me a message for WhatsApp group and I will create a group of those students. Okay, because you are regular, so you can make a better coordination. Okay, now in last class we discussed a basic introduction about how East India Company started the exploitation of India, and this chapter is a battleground for the historians. There are different group of historians and they had different perspectives, right? We have discussed it. Now we don't need to know the name of the historians in GS. Simply we need to know the approaches, so that whenever we will get a question in our mains exam, so we could easily identify, okay, the nature of the question, and we can frame a better answer, okay, for that particular question. So that's why we need to be familiar only with the basic approaches. You are familiar with the basic approaches? Okay, Nestle's historian's view. Okay, later there are a few topics like deindustrialization, forced commercialization of agriculture, decline of handicraft, right? Development of railways in India, okay? Development of banking and financial institutions in India, development of other consumer, you can say that other companies in India. So there also we need to have this approach. We will use this. And here the second part that we are entering is land revenue policies in British India, right? Land revenue policy. So we need to discuss that. Okay, and now I'm going to start this topic, and first I will start with Warren Hastings. Clear? In last class I just gave a, okay, overview of that topic, so now we are going to start. Okay, now are you familiar with all these issues? Okay, some issues I have already discussed in the previous chapter. Okay, that what was the Battle of Plassey, significance of Battle of Plassey, Battle of Buxar, its significance. Okay, then Treaty of Allahabad, dual system of governance, everything we have discussed in our previous classes. पहले ही हम इसको discuss कर चुके हैं, right? And dual system of governance. In this dual system of governance, the land revenue was collected from the people. But was there any particular model? No, no particular model. Clear? The models which were already in practice, that was followed, and there was a great deal of confusion also. Why confusion? Because Mughal power was declining. Different states have declared their independence. Here we are taking reference of mainly Bengal, right? So basically the British will use, okay, you can say that mix up, okay, those things that are in continuance, they are using the same things, and that's why there was a lot of corruption. When until unless you develop an organized system, centralized system, so what will happen? Corruption will prevail. For example, I am running a coaching institution, right? And until unless I will not develop a centralized system, okay, how can I take admission? Okay, if I will authorize 5 or 10 people to take admission, what will happen? This is a simple idea.
that until unless you develop a particular model of administration, you are going to suffer challenges होंगे ही होंगे. Okay, and these challenges created problems during these 7 years. There was a lot of corruption, and the British government was also criticized that the government is promoting this corruption in India. Because who is doing corruption? Company officials are doing corruption. And who has given rights to this company and company officials? Kisne right diya hai? So the government has given this right. So the government will be questioned that you are promoting corruption in India, and this corruption is done by a corporate company, and that is what corporate corruption and corporate violence in India. ठीक है, ये है corporate corruption and corporate violence in India. This is happening. Okay, so we are familiar with this. Now we are entering into the topic. Then I will also discuss the slide to revise the themes. First, let's discuss or let's develop some ideas about the basic topics. ठीक है, एक basic idea frame करते हैं. Then I will add new content in that. Okay. Right. So just here, just for your reference, so that you could understand the later development here. 1765 to 1772. These are 7 years. Okay. This is the time period of dual system of governance in Bengal. And here the company has got what? Diwani rights, the right to collect land revenue, the right to collect land revenue. And in the collection of land revenue, what we see is that there were different challenges here. There were different challenges here. And what are these different challenges? One important challenge here is that though there is the absence of any particular model or fixed model, कोई ऐसा particular model नहीं है, fixed model नहीं है. So there is the absence of any particular model or any fixed model. कोई particular model नहीं है, कोई fixed model नहीं है. Okay. There is no any settlement done with any particular class. इस कोई भी ऐसा particular class नहीं है जिसके साथ कोई settlement किया गया है. That is the problem. Okay. So there was no any particular class. There was no any particular class with which the settlement was done. With which the settlement was done. There was no any particular class with which the settlement was done. कोई ऐसा particular class नहीं है with which the settlement was done. तीसरी important point क्या है? That AIC officials had got a new task, the task of collection of land revenue. For this they will have to communicate with the local people. आम लोगों से बात करनी पड़ेगी ना, tax collection करने जाओगे तो. And the local people will speak which language? Vernaculars. वो तो local languages बोलेंगे, and you are speaking what? English. तो communication की भी problem है. So you will take the services of intermediaries. बहुत ज़्यादा आपकी dependence किस पे होगी? Intermediaries पे. That is the next important challenge here. That at this point, that challenges of communication. Challenges of communication. So here, the role of intermediaries is required. और जहाँ पे जितने ज़्यादा intermediaries आ जाते हैं, जिनको हम दलाल कहते हैं, ठीक है, इन द लोकल वर्ड्स, वहाँ करप्शन क्या होगा? ज़्यादा बढ़ेगा. करप्शन विल बी वेरी हाई. दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है. प्लस सपोज यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, यू आर जस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और यू कैन से दैट सुपीरियर अथॉरिटीज दैन दिस, डीजीपी रैंक के आप ऑफिसर हो, और अगर आप खुद ही करप्शन कर रहे हो, यू आर टेकिंग ब्राइब, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विल ऑल्सो टेक ब्राइब. डीएसपी भी ब्राइब लेगा ना, एसएचओ भी ब्राइब लेगा, कांस्टेबल भी लेगा.
तो इफ वी वांट टू चेक करप्शन, तो ईमानदार किसको होना पड़ेगा? अगर इन फ्यूचर ओके यू विल बी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या जाओगे कल को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो गए, और अगर आप ऑनेस्ट निकल गए, ठीक है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी से एक पैसे करप्शन कर ले या ब्राइब ले ले। समझ गए ना? आप वो जो करप्शन का पूरा चैनल है, उसके बीच में आके एक ऑब्स्टेकल बन जाओगे, पूरे करप्शन के चैनल को ब्लॉक करोगे। तो ऐसे ऑफिसर्स को क्या किया जाता है? चैनल से बाहर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है कि भाई चैनल को डिस्टर्ब मत करो। होता है ना? द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स get transferred hundreds of times in their lifetime because they obstruct this channel. ये भी हमने सीखा है ईस्ट इंडिया कंपनी से ही कि करप्शन कैसे करते हैं। एंड व्हाट वाज हैपनिंग हियर? क्लाइव वाज अर्निंग अ लॉट। कितना पैसा कमा रहा था? इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, ब्राइब्स, पर्सनल जागीर्स वगैरह मिले थे, राइट? So what will happen? What do you think about the EIC officials? Don't do you think that they will also take bribe? अगर क्लाइव नवाब से घूस ले रहा है तो कंपनी ऑफिशियल्स दुकानदार से लेंगे, मर्चेंट से लेंगे। मेरी बात समझ गया ना? डील करने का तरीका बदल जाएगा। सो दिस वाज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ करप्शन हियर। ओके, हियर वी सी व्हाट? अ लॉट ऑफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, अ लॉट ऑफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, सब कुछ हो रहा है, ठीक है? करप्शन, मिसमैनेजमेंट, ठीक है? इट मीन्स दिस इज व्हाट? Okay, order or disorder. This is a kind of disorder. Management or mismanagement. This is mismanagement. This is a condition of what? Chaos. And there were critics of East India Company in Britain. ब्रिटेन में कंपनी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो ब्रिटिश लोग ही हैं, दे आर द ब्रिटिश पीपल। एंड वाई दे आर क्रिटिसाइजिंग कंपनी? बिकॉज ओके देयर राइट्स वर अफेक्टेड व्हेन EIC वाज गिवन मोनोपोलिस्टिक राइट। अगर केवल एक ही कंपनी ट्रेड करेगी इंडिया के साथ, तो व्हाट अबाउट द अदर प्राइवेट ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन? ओके, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, बट दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। दे वांटेड टू गेट द शेयर फ्रॉम द प्रॉफिटेबल ट्रेड इन इंडिया, बट दे वर अनेबल टू डू सो। ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि पूरी की पूरी राइट किसके पास थी? कंपनी के पास थी। कंपनी वॉज हैविंग द सोल राइट to do trade and commerce in India. So whenever they will get the opportunity, they will criticize East India Company, okay, of mismanagement, of different corrupt practices and challenges. So this was happening here, right? Right, this the critics of EIC in Britain. At this point, the critics of EIC in Britain, the critics of EIC in Britain criticized, the critics of EIC in Britain criticized about the corrupt practices, about the corrupt practices of EIC. They criticized about the corrupt practices of EIC. They criticized about this corporate violence and corporate conspiracy of EIC. They criticized about this corporate violence and corporate corruption of East India Company. And the people started demanding, ब्रिटेन के लोग ये डिमांड करने लगे, that the monopolistic rights of EIC must be ended or taken back. ब्रिटेन के लोग ये डिमांड करने लगे कि कंपनी की मोनोपोलिस्टिक राइट्स को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। दैट मस्ट बी एंडेड, दैट मस्ट बी अबॉलिश्ड। ओके, so now this had become a very popular demand in Britain. This had become a very popular demand in Britain, and the people were demanding that the EIC's monopolistic rights, EIC's monopolistic rights must be ended or abolished. EIC's monopolistic rights must be ended or abolished. कंपनी की मोनोपोलिस्टिक राइट को क्या कर दो? खत्म कर दो। नाउ सपोज यू आर ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस, व्हाट विल बी योर ओपिनियन? आप क्या करोगे? कंपनी की मोनोपोलिस्टिक राइट्स को खत्म कर दोगे? कंपनी पैसा किसको खिला रही थी? पार्लियामेंट्रियंस को, कि भाई ये ध्यान रखना, अपनी मोनोपोलिस्टिक राइट्स नहीं जानी चाहिए, समय समय पे आपके, ठीक है, पास पैसा पहुंचता रहेगा, ठीक है? मेरी बात समझ गया ना? ये पूरा देखो करप्शन का कितना बड़ा चैनल है।
that the people are demanding and the parliamentarians are getting bribes from the company. So what they will do, they will try to protect the probabilistic rights of company in parliament. वो आर्ग्यू करेंगे कि भाई कंपनी की राइट्स बची रहनी चाहिए, कंपनी की राइट्स नहीं जानी चाहिए. गॉट इट? दिस वाज हैपनिंग. नाउ इन दिस सिचुएशन अब गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा ना आकाश, आशिका, गवर्नमेंट विल हैव टू डू समथिंग. कुछ करना पड़ेगा, प्रेशर होता है जब गवर्नमेंट के ऊपर, तो नहीं भी करना होता है फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. नो द गवर्नमेंट विल से दैट ठीक है, ओके, ये किसका किया जा रहा है, किसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, क्लाइव का, बुलाओ क्लाइव को, ठीक है, क्लाइव को बुलाओ, बहुत परेशान किया है ना. एंड देन द कंपनी विल, द गवर्नमेंट विल से दैट वी विल सेंड वॉरेन हेस्टिंग्स. किसको भेजना है? वॉरेन हेस्टिंग्स को. एंड वाई हेस्टिंग्स वाज सेंट टू इंडिया? टू रिफॉर्म दिस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इस एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को क्या करो? ठीक करो. लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में जो करप्शन है उसको कम करो. अच्छा ये बताओ, इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इफ देर इज करप्शन, so it is affecting the profits of company. If corruption will be checked, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ये भी ध्यान रखना है आपको. मेरी बात समझ गया ना? अगर सड़क पे ट्रैफिक पुलिस वाले घूस ले लेते हैं, लोगों से ब्राइब ले लेते हैं, अगर वो लेना बंद कर दे तो क्या होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा ना? ओके. ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया तो इससे सीधे सीधे फायदा किसको होने वाला है? गवर्नमेंट को होने वाला है. दूसरा, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओके, द पॉपुलर डिमांड्स ऑफ पीपल विल ऑल्सो बी एड्रेस. लोग कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी मतलब बेहतर हो जाएगा. So what we see here is that, right, this point that Warren Hastings was sent to India. 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 और टाइम पीरियड वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या है, ध्यान से देखना ये एग्जैक्टली और यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को दिमाग में रिलेट करना है, फैक्ट्स को. मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप एक एक चीज को रिलेट करो, रटना ना पड़े. वॉरेन हेस्टिंग्स विल कम और आते ही ये सबसे पहले क्या करेगा? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अबॉलिश कर देगा. ही विल अबॉलिश. तो दिस कैन बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन दैट वॉरेन हेस्टिंग्स डिड व्हाट. राइट दिस. इन 1772 dual system of governance will be abolished. Dual system of governance will be abolished. ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अबॉलिश करेगा. देखो पैरेलल कितने सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं. चूंकि हियर वी आर फोकसिंग ओनली ऑन लैंड रेवेन्यू, तो विल डिस्कस लैंड रेवेन्यू ओनली, बट आई विल गिव अ हिंट कि और पैरेलल क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? फर्स्ट टाइम in the history of 172 years, a legislation will be introduced to regulate the affairs of East India Company in India, and that is known as Regulating Act 1773. रिलेट कर पा रहे हो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से कि रेगुलेटिंग एक्ट कब है? ओके, सो दिस रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ एक बॉक्स बना के लिख लो सो दैट यू कुड रिलेट द थिंग्स. रेगुलेटिंग एक्ट 1773. The name of this act is Regulating Act. So what was the purpose of this legislation? The purpose of this legislation was to regulate the affairs of EIC in India. This was the very basic purpose of this Regulating Act, to regulate the affairs of EIC in India. मेरी बात समझ के, यही तो है बेसिक पर्पस. और ये पहली बार, इट मीन्स कंपनी इंडिया में कब से है? 1600. और ये ईयर क्या है? 1773. टोटल दिस इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 170 to 173 ईयर्स. पहली बार गवर्नमेंट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया में कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत. आज अगर आप देखोगे तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कितने सारे एक्ट हैं इंडिया में. इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा. देयर आर सो मेनी एक्ट्स, रेगुलेशंस द गवर्नमेंट हैज मेड टू रेगुलेट द कंपनीज इन इंडिया. ठीक है ना. और ये पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आ रहा है 1773.
बट ब्रिटेन के लोग कहेंगे यार ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या बना दिया तुमने, ये सफिशिएंट नहीं है, दे विल स्टिल क्रिटिसाइज. इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, व्हाई द पीपल विल क्रिटिसाइज. देन द गवर्नमेंट विल ब्रिंग another act that is known as Pitt's India Act. Pitt's India Act, and the year is 1784. और ये क्यों लेके आए? अगेन टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द पीपल, टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ पीपल, ओके, and to establish better control, and to establish better control over the administrative affairs of EIC. This is the purpose, to establish better control over the administrative affairs of EIC. This was the purpose. ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पे और भी ज़्यादा बेटर कंट्रोल स्टैब्लिश किया जा सके. दिस वाज द पर्पस, टू एस्टैब्लिश द बेटर कंट्रोल ओवर द. नाउ व्हाट यू हैव टू रिलेट, दिस इज द टाइम व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स इन इंडिया. जब वॉरेन हेस्टिंग्स एट द सेम टाइम व्हाट वी सी, दैट रेगुलेटिंग एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. एट द सेम टाइम व्हाट वी सी, ओके, पिट्स इंडिया एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, गॉट इट? In, yes, please. नहीं नहीं 1784 ना, पिट्स इंडिया एक्ट. 1773 एंड 1784. ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नाउ यू कैन रिलेट हियर दैट हियर व्हाट इज हैपनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स इज द. तो वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे क्या कर रहा है? रेड दिस. इसका टास्क क्या है? द टास्क इज टू रिफॉर्म, टू रिफॉर्म or to bring reforms in the system of administration in India. ये इसका टास्क है, to bring reforms in the system of administration in India. So here we are talking only about land revenue reforms. ठीक है ना? तो other reforms we will discuss separately. I will discuss one topic where I will discuss important governors and governor generals. ठीक है ना? उनके बारे में in detail discuss करेंगे, but later. So here he has to address reforms. And here we are particularly discussing about what? Reforms in revenue system of administration. Reforms in revenue system of administration. Okay, reforms introduced by Warren Hastings. Reforms introduced by Warren Hastings and revenue system of administration. This we are going to discuss. Now our topic is reforms introduced by Warren Hastings. Reforms introduced by Warren Hastings, okay, where in the revenue system of administration. The time period is 1772 to 1785. So what he did? So his particular concern is which province? Bengal, Bihar, Odisha. Basically Bengal, Bihar, Odisha. यहीं का तो दीवानी राइट्स मिला था ना. So Bengal, Bihar and Odisha. That is the main concern. Now what Warren Hastings will do? ये क्या कहते हैं? द ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम दैट वी वर द इनोवेटर्स. हम क्या थे? इनोवेटर्स थे. बट व्हाट इज द रियलिटी? दे वर द इनहेरिटर्स. वो हमारी ही पुरानी मॉडल्स को क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे. दे वर नॉट इनोवेटर्स, दे वर द इनहेरिटर्स. नाउ यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस, दैट व्हाट डू यू थिंक, ईआईसी वाज इनोवेटर और इनहेरिटर? बस सर पकड़ के बैठ जाएगा बच्चा. क्या? क्यों सर पकड़ के बैठ जाएगा? क्योंकि आप तो रट्टा मार रहे हो. ठीक है, आप सोच ही नहीं पाओगे कि वाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, राइट? तो नाउ हियर आई एम राइटिंग दिस वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू कैन राइट दिस. वन वर्ड इज व्हाट? इनहेरिटर. इनहेरिटर, ठीक है. एंड द सेकेंड वर्ड इज इनोवेटर. इनहेरिटर एंड द सेकेंड वर्ड इज इनोवेटर. ठीक है. नाउ EIC is what? इनोवेटर और इनहेरिटर. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, और यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. इन इंटायर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज यू विल फाइंड दैट इन EIC इज इनहेरिटर, इट्स नॉट इनोवेटर. और एक होता है इनहेरिट करना, जैसे आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ठीक है, बहुत सारा एसेट दिया, प्रॉपर्टी दी आपको, और आपने क्या किया? ठीक है, वो आता है ना ऐप पे बहुत सारे गेम चल रहे हैं, सब खेल के सब उड़ा दिया. ठीक है, तो आप इनहेरिटर थे, लेकिन इनहेरिटर हो के आपने क्या किया? सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया, क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया. ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी विल डू द सेम.
इनहेरिट करेंगे बट वो भी ठीक ढंग से इनहेरिट नहीं करेंगे, दिस आई मीन टू से। तो देखो इन बंगाल देयर वाज अ वेरी पॉपुलर नवाब, वेरी इफिशिएंट नवाब, and the name of this nawab was Murshid Quli Khan. In first chapter we have already discussed, yeah, discuss. And Murshid Quli Khan has introduced a system that was known as system of revenue farming. क्या ये डिस्कस किया है हमने? Yes, we have already discussed. Okay, and in this revenue system farming which I have already discussed with you, okay, the land revenue settlement was done with revenue farmers. We have already discussed it, that here the land revenue settlement was done with whom? So it was done with revenue farmers. Okay, now who are the revenue farmers? Okay, this can be the old traditional zamindars also, this can be businessmen also. They can do what? Okay, auctioning will be done and they can get lands on lease. They will collect land revenue from that particular area and they will give what? One time payment to the Murshid Quli Khan. Yehi system tha na? This was the system. Simply it means that this revenue system, farming system, was what? Auction based system. Here auctioning was done, auction based system. And by this auction based system, Murshid Quli Khan was able to get one time payment. इसको one time payment मिल जाता था, right? One time payment. And the land was given on the lease. The land was given on the lease for the purpose of collection of land revenues. The land was given on lease for the purpose of collection of land revenues. ठीक है ना? The land was given on lease. And to whom it was given? So it was given to the highest bidder. It was given to the highest bidder who will offer the highest bidding amount. Okay, the land will be given to that particular person. Okay, the one who will give highest bidding amount, the land will be given. अगर highest bidding amount दिया जाएगा so land will be given to the highest bidder. Okay, जो auctioning करेगा. Got it? This is the सर करता हूँ मैं आपको, ठीक है? This is the point, the land will be given to the highest bidder. समझ गए? Now वॉरेन हेस्टिंग्स इज इनहेरिटर. क्या किया इसने? चुरा लिया इसी मॉडल को, ठीक है? और क्या करता है यहाँ? Read this. Warren Hastings did what? Read this. Copied the same model. Exactly. Copied the same model. Copied the same model. इसी मॉडल को कॉपी कर लिया एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज इजारेदारी. ठीक है, इजारेदारी. इजारा वर्ड इज अ उर्दू वर्ड. इजारा. Izara means contract. Izara means what? Contract. Izara word is very important. Izara means contract. Izara को क्या कहते हैं? Contract. ठीक है. देखिए आपके कॉन्टेक्ट में जो भी बच्चे थोड़े सिंसियर हो ना, अगर उनके पास टाइम हो तो बोलो लाइव आके पढ़ें, ठीक है ना? बिकॉज इसके बाद शायद मतलब सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग जाएंगी, क्योंकि मुझे मेरा लंबा प्रोजेक्ट है, 6 महीने साल भर लग जाएंगे मुझे रिकॉर्ड करने में, ठीक है? तो मॉडर्न हिस्ट्री लाइव में शायद मैं आखिरी बार ही पढ़ा रहा हूँ. दिस इज द लास्ट टाइम. So if you will join, you can ask the question, because modern, ancient, बहुत सारी चीजें, there are a lot of things that I have to record. ठीक है? So you can, when you will join interactive session ना, you can ask the questions, doubt पूछ सकते हो. Got it? Okay. Now this is what Izara based system, contract based system. Now what is Warren Hastings will do? Warren Hastings will give the land, okay, on the lease. Warren Hastings will give the land on the lease. And whom he will give this land on the lease? किसको देगा? Okay, to the highest bidder. किसको दे देगा ये? He will give the land on the lease to the highest bidder. Highest bidder. Highest bidder को land lease पे दे देगा. It means he is doing what? He is auctioning. He is auctioning the land. अच्छा, इससे फायदा किसको हो रहा है? हु इज गेटिंग बेनिफिट्स बाय दिस सिस्टम? कंपनी. कंपनी इज गेटिंग वन टाइम पेमेंट. एक बार में पैसा कंपनी को मिल जा रहा है.
So by this, the company is getting one-time payment here. The company is getting one-time payment. Okay, so this is beneficial for the East India Company. Company is getting one-time payment. और देखो कितना स्मार्ट है. अच्छा देखो, if you will do auctioning every year, so what will happen? Administrative expenses will be involved. तो कितना अच्छा हो कि एक ही बार 5 साल के लिए ऑक्शनिंग कर लिया, 5 साल के लिए लीज पे दे दिया, राइट? सो व्हाट वॉरेन हेस्टिंग्स विल डू, he will introduce this system as a 5-year settlement, right? This system was introduced as a 5-year settlement. This system was introduced as a 5-year settlement. Okay, so this is known as panchshala. Panch means 5, ठीक है, and shala means not brother-in-law, ठीक है, year, right? Panchshala, right? This is panchshala, 5-year settlement, right? Panchshala. Now you will tell me, Warren Hastings was what? Inheritor or innovator? Inheritor, ठीक है. अच्छा देखो इसके बाद क्या करता है. He has auctioned the land for 5 year, 5 साल के लिए ऑक्शन कर दिया. After 2 or 3 years he realized कि कुछ तो लैंड्स को लीज पे हमने दे दिया, इनकम ज्यादा हो रहा है और हमने कम पैसे में लीज पे दे दिया. This might be possibility or not. You are giving land on lease for a period of 5 years, and after 1 or 2 years you realized that I have given this land on lease for 5 years to Vipin, okay, by taking 1 lakh rupees, and now he is earning 1 lakh rupees annually. अब क्या कर सकते हैं, अब तो लैंड को लीज पे दे दिया, यानी प्रॉफिट हमसे ज्यादा किसको हो रहा है, जो लीज पे लिया उसको हो रहा है. तो इन 1777 ये 5 साल का सेटलमेंट खत्म होगा. फ्रॉम 1772 to 1777, हाउ मेनी इयर्स? 5 years. So 5 years will be over. Now Warren Hastings will change the rule. लालची आदमी अपने रूल को बार बार बदलता है. He will change the rule. What will he say? अगर नाउ इट विल बी एनुअल सेटलमेंट, अब हर साल के लिए 1 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा और फिर 1 साल के बाद नया अमाउंट डिसाइड किया जाएगा. विल बी एबल टू डिसाइड न्यू अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर. दिस शोज व्हाट? ग्रीड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. मेरी बात समझ गया ना? दिस इज ग्रीड. सो राइट दिस. इनिशियली इट वाज अ 5-year सेटलमेंट. It means from 1772 to 1777. This was a 5-year settlement, and for this reason, this is also known as Panchshala. For this reason, this is also known as Panchshala. But what will happen here in 1777? When Warren Hastings will realize, that the EIC suffered loss. EIC suffered loss, okay, in this model. How it suffered loss मैंने बता दिया, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें याद भी रखो. EIC suffered loss in this model. Then what will he do? He will bring some correction. And what is this correction? The correction is, it was made 1-year settlement or yearly settlement. It was made an yearly settlement. ये yearly settlement हो गया, यानी कि now this will be like this. Yearly settlement 78, 79, 79, 80, ठीक है. This is yearly settlement. यहाँ पे क्या था? It was 5-year settlement. That's why it's Panchshala. Panchshala is a part of this इजारेदारी system. ये उससे अलग नहीं है. Got it? This is what Warren Hastings did in the name of bringing reforms in system of. Yes, please ask, Vipin. हो सकता है कुछ बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, रेगुलरली आई एम स्पीकिंग, तो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है. दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट वाइल स्पीकिंग चीज़ें कई बार आ जाती है, ठीक है. प्लीज़ करेक्ट इट, ठीक है. ये सिस्टम ऐसा है, ठीक है ना. वो बोलते समय हो गया होगा शायद, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ठीक है. कई बार दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और बोल कुछ और देते हैं, ठीक है ना. ओके, राइट, गॉट इट, करेक्ट कर लिया आपने. नाउ दिस इज पंचशाला. यहाँ कोई प्रॉब्लम? अच्छा आप ये बताओ कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी
on the peasants. Now you will just suggest me some points. What will be the impact on the peasants and what is its impact on EIC? What is its impact on peasants and what is it is significant for whom? Significance में the first point we should indicate is what? For whom? Izaredari system is significant for whom? It is significant for EIC only, because by this policy EIC was successful in getting what? In collecting what? One time payment. एक बार में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पेमेंट मिल गया, रेवेन्यू मिल गया. गॉट इट? दे गॉट वन टाइम रेवेन्यू. दैट इज द आइडिया हियर. They got one time revenue, one time payment. In this way, their profits or gains were maximized. इनके profits maximize हो गए, gains maximize हो गए. And what will be the impact on the peasants? Peasants पे क्या impact होगा? देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा change है. What is the change here? That when there is East India Company rule in India and Warren Hastings is doing auctions, so company is a trading company. कंपनी जब भी कोई पॉलिसी लेके आती है, जैसे आप में से कई लोग शेयर मार्केट में पैसा वैसा लगाते हो, नजर रखते हो ना इस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, वैसे ही कंपनी अगर कोई पॉलिसी लेके आएगी तो जितने भी बिजनेसमैन लोग होंगे क्या करेंगे? वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे. तो यहाँ पे हु इज द बिडर? द ट्रेडिशनल जमींदार्स आर द बिडर्स और द न्यू बिजनेसमैन? न्यू बिजनेसमैन, बिकॉज न्यू बिजनेसमैन कैन ऑफर मैक्सिमम बिडिंग अमाउंट. ट्रेडिशनल जमींदार कहेगा यार इतना तो रेवेन्यू ही नहीं आता है, इतनी बोली मैं क्यों लगाऊं? आई विल नॉट ऑफर दैट हाईएस्ट अमाउंट. एंड व्हाट businessman will say? He will say that we can take risk, we can offer the maximum amount. And once the businessman will offer the highest amount or the highest bidding, they will collect what? More and more land revenues from the peasants. They will use what? Force. They will use coercive means to collect land revenue from the peasants. And now peasants were not able to pay that much high revenue. So peasants will start evicting their homes. The peasants will start evicting their land. Peasant क्या करने लगेंगे? अपने land को, अपने घर को खाली करने लगेंगे, भागने लगेंगे. They will start fleeing. Clear? And what will happen? The agriculture now will become more profitable or less profitable? Less profitable. जब एग्रीकल्चरिस्ट का मोटिवेशन ही कम हो जाएगा, जब उनको प्रॉफिट का प्रॉपर शेयर नहीं मिलेगा, व्हेन दे विल नॉट गेट द प्रॉपर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, व्हाट विल हैपन? ठीक है, गॉट इट? गॉट दिस आइडिया, एंटायर आइडिया? सो दिस इज हैपनिंग, यही हो रहा है इन बंगाल. ओके, दिस इज व्हाट वॉरेन हेस्टिंग्स introduced this system. This is the system of Warren Hastings. Is it clear? Izaredari, Warren Hastings land revenue system. Okay, now I will enter into the other part, but before this let's revise it with the help of a slide. एक slide से revise करते हैं so it will be better. Okay, if we will do revision with the help of slide, because we don't need to read the books here, तो थोड़ा सा revision ज़रूरी हो जाता है उस केस में, right? We need some revision. Now लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अंडर द ब्रिटिश रूल, यही टॉपिक हम पढ़ रहे थे. वी आर डूइंग सम रिविजन्स कि हमारा सेल्फ स्टडी वाला काम थोड़ा कम हो जाए. तो इजारेदारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स. हैव यू अंडरस्टूड? पंचसाला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स. नाउ देयर आर अदर 3 सेटलमेंट्स दैट आई विल डिस्कस. ठीक है, हियर permanent system of settlement or zamindari settlement was done with a particular class, that is landlord. So this is what? Landlord based system. क्या एंशिएंट इंडिया में ऐसा नहीं होता था? लैंडलॉर्ड्स इंडिया में नहीं थे. तो दिस सिस्टम इज व्हाट? इनहेरिट किया या इनोवेट किया? इनहेरिट किया, राइट? इन द सेम वे रैयतवाड़ी, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज डन विद द इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स. किसानों के साथ किया गया. क्या एंशिएंट इंडिया में ऐसा नहीं होता था? मिडिवल में ऐसा नहीं होता था? होता था, शेरशाह के टाइम में होता था. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट कंपनी हैज inherited. They are not innovators. Got it?
here mahal, mahal means होता है villages or group of villages. This is the meaning of mahal. So this was a village based system. It means here who will collect and submit land revenue to the East India Company. So villages will collect and submit. Here who will pay land revenue directly to the company officials? Individual cultivators. Here zamindar. So later we'll discuss this topic also in detail. Now here let's discuss some important statement here that can be prelims question. Land revenue before this British rule, okay, that is what Mughal rule. British rule के पहले क्या है? Mughal rule. Got it? Mughal rule. So in 16th 17th century, basically when Akbar came to power, Akbar introduced a system that is known as Mansabdari system. It was the system of administration. At the time of Akbar, administration का ही system था. Now during the, तो अब यहाँ पे देखो, during the declining phase of Mughal rule, officials and others grabbed power where they could and become de facto hereditary. इसके पहले एक और पॉइंट समझते हैं, that is very important. Okay, है कि नहीं इसमें? ओके नहीं है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ आपको. देखो, in mansabdari system when Akbar was ruling, okay, so he developed a vast bureaucratic. Akbar developed what? Vast bureaucratic structure develop किया. It means there were state officials to look after or handle the administrative task. There were state officials to collect land revenue also. तो बताओ ये क्लासिकल मॉडल है कि नहीं? यस, आज भी ऐसा होता है. देयर आर स्टेट ऑफिशियल्स, so there were state officials to handle administrative tasks here. There were state officials to handle administrative task, or we can say that to collect land revenue. State officials हैं जो administrative tasks को handle कर रहा है, and they are collecting land revenue. Who is collecting land revenue? State official. Who is handling? Now here what will happen? So देखो, the land revenue collection rights where, now I am asking this question to you, सोच के बताना जिन्होंने medieval history पढ़ा है. The land revenue collection rights that were given to the mansabdars were, I am writing one word, hereditary or non-hereditary. लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट क्या होगा? हेरिडिटरी होगा और नॉन हेरिडिटरी. एट द टाइम ऑफ अकबर, देखो हमेशा याद रखो, जब भी पावरफुल रूलर होगा और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत शानदार होगा, स्टेट ऑफिशियल्स का एक प्रॉपर नेटवर्क होगा, तो वहां पे राइट्स आपके हेरिडिटरी नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे? नॉन हेरिडिटरी. जैसे आप आईएएस बन जाओगे तो क्या आपका बेटा भी आईएएस बन जाएगा, बेटी भी आईएएस बन जाएगी? नहीं. ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस बात को. तो द लैंड रेवेन्यू राइट्स वेर नॉन हेरिडिटरी. अच्छा, नॉन हेरिडिटरी के साथ साथ जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स होगा, ये ट्रांसफरेबल होगा कि नॉन ट्रांसफरेबल होगा? बताओ. ट्रांसफरेबल. देखो, इट इज ट्रांसफरेबल. देखो क्या है, नॉन हेरिडिटरी है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? ट्रांसफरेबल. इट मीन्स स्टेट ऑफिशियल्स कैन बी चेंज्ड. मनसबदार्स को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है. ठीक है, मेरी बात समझ गए ना? हालांकि इस मॉडल में बहुत बार चेंजेस हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट दिस इज व्हाट द कॉमन पॉइंट दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू. ठीक है ना? बिकॉज इन मेडिवल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. तो राइट दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर. यही था बेसिक स्ट्रक्चर इन मुगल रूल कि लैंड रेवेन्यू राइट्स वेर नॉन हेरिडिटरी. हालांकि देखो मैंने कहा बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बट हियर दिस इज द मेन आइडिया जो हम रिलेट करने जा रहे हैं. एंड इट वाज ट्रांसफरेबल. ये बात समझ गया? अच्छा एक बात बताओ, व्हेन द मुगल पावर विल डिक्लाइन आफ्टर औरंगजेब, देयर इज द फेज ऑफ लेटर मुगल्स, वीक मुगल रूलर्स. व्हाट विल हैपन इन दैट स्टेज? क्या होगा? स्टेट ऑफिशियल्स विल ग्रैब फर्दर मोर पावर और लेस पावर? मोर पावर. If the state will start declaring itself independent, the state officials will grab more power. So what they will do? They will make their rights hereditary by themselves. ठीक है, खुद ही कब्जा जमा लेंगे. जैसे मराठास का केस बताया था आपको, याद आ रहा है कुछ? कि मुगल एम्परर ने क्या किया था? 1719 फरमान. Deccan and Sardesh Mukhi, they were authorized to collect from the Deccan provinces which were the part of Mughal Empire. But Marathas ने क्या किया? They declared themselves as the hereditary chiefs of that particular area and introduced Watan and Saranjam
सिस्टम मराठा लेके आए थे ना, ये भी बात आप याद रखना. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड द सेम हैज बीन रिटन हियर दैट ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ मुगल रूल officials and others grabbed power where they could and become de facto hereditary landlords and petty chiefs in the local areas. धीरे धीरे वो अपने लोकल एरियाज में खुद ही चीफ बन गए. दे बिकेम डिफैक्टो हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स एंड पेटी चीफ्स इन देयर लोकल एरियाज. दिस वाज हैपनिंग. ठीक है, अपने लोकल एरिया में वो हेरिडिटरी चीफ्स बन गए. दिस ऑल वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस. नाउ Warren Hastings and his land revenue system. 1772, Warren Hastings was appointed as governor of Bengal. Okay, and he was given the task of reforming land revenue system of administration. Other tasks were also there. दूसरे task भी थे. But Hastings faced three major problems in introducing the land system. यानी Hastings को कौन कौन से problems आए? There were three major problems. इसका मतलब the EIC was facing some problem कि कैसे कौन सा model, which model should we introduce and implement. Now the first was there was no survey of the extent of the damage caused by the Battle of Plassey and the subsequent mismanagement of the revenue regime and the Great Famine. So Hastings did not know what basis he would determine the revenue. Before 1772 in Bengal, what has happened? एक फेमाइन भी आ चुका था and that was the great famine of Bengal in which 20 to 30% people were died. And after this battle of Plassey, battle of Buxar, what has happened? A lot of mismanagement. The entire system was mismanaged in these 7 years. Okay, disorderly administration and economic prosperity in Bengal was declining. So it will become very difficult for you as an administrator कि how much land revenue I should collect from the people. ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए. People are already overburdened. Okay, economic activities have been disrupted due to the corruption of the East India Company. तो पहली challenge Hastings को यही हुई कि how to fix the land revenue because there was no any proper data. ठीक है, कि कितना लॉस हुआ, कितना डैमेज हुआ. इट वॉज येट टू बी स्टडीड. अभी ये स्टडी होना था. सो दिस इज द वन चैलेंज. एंड द सेकेंड चैलेंज that the company or the Warren Hastings faced was the problem of lack of ignorance in language. Communication problem that I recently discussed with you. That you will communicate in English and the local farmers will communicate in their vernacular languages. So that will be the another problem. Okay. EIC officials were also not familiar with the local customs and traditions, clear, of these native people, and they did not have adequate manpower also, because this is the beginning of administrative role of East India Company in India. अभी तो recruitments करने थे ना उनको. क्या उनके पास sufficient manpower था? Administrators थे? No, they did not have sufficient manpower or administrator. So the means of collecting the company's revenue was not certain. How to collect the land revenue? It was not certain. It was very difficult. And what is the third point? The third point is administrative cost. Okay, the administrative cost will be higher if the company hires people to collect revenue. ध्यान से समझना, administrative cost will be higher if themselves they will start hiring the people to handle all these administrative works and the task, collecting land revenue and everything. So it will be very difficult for them. ठीक है, ये मुश्किल हो सकता है. ठीक है, now in this situation, okay, so domestic agency is better. And what could be the domestic agency? Domestic agency क्या हो सकती थी? Okay, you can adopt the same model which was one of the best model of that time, which was previously used by Murshid Quli Khan, where he was auctioning the land. Some selective people, they will collect the land revenue, they will get land on lease, and in this way you can easily collect the land revenue, and you can get the land revenue one time, एक ही बार में. ठीक है, आपको लैंड रेवेन्यू मिल जाएगा. कितना मजेदार है, कितना चालाक है. ठीक है, तो अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे, बट दे वर ऑलवेज कीपिंग इन माइंड देयर इंटरेस्ट और द प्रॉफिट. क्या ऐसा लग रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स केवल और केवल क्या सोच रहा है कि हाउ कंपनीज प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड
बट द प्रॉब्लम इज हु विल बी डिटरमाइंड बाय द डोमेस्टिक एजेंसी, कौन कलेक्ट करेगा? तो द वन हु विल ऑफर हाईएस्ट बिडिंग अमाउंट। ये क्या दिखलाता है? दिस इज द ग्रीड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है जो आपको एक बार में सबसे ज्यादा अमाउंट पे कर सकता है फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। सो दिस इज द पॉइंट हियर। ओके, नाउ दिस सेटलमेंट, 5 year settlement, is also known as क्विनक्विनियल सेटलमेंट। मत ये डिफिकल्ट वर्ड हटा दो, ठीक है? ये चतुर्रामलिंगम का वर्ड है। सीधे क्या लिखो? 5 year सेटलमेंट, ठीक है? डोंट गो टुवर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड्स लैंग्वेजेस, जरूरत ही नहीं है। हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड 5 year सेटलमेंट। जहां भी डिफिकल्ट वर्ड हो सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है? टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब इनका एक्सपेरिमेंटल स्टेज था, वैक्सीन टेस्ट कर रहे थे कि कौन से मॉडल से कौन सा ज्यादा मतलब रेवेन्यू आ सकता है। दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल मॉडल, सो ही वाज लर्निंग आल्सो, ही वाज आल्सो गेनिंग एक्सपीरियंस। इन दिस पॉलिसी द zamindari system of Bengal was changed and 5 year of rent was levied on the leaseholders who promised to pay the maximum rent through auction। बता ही चुका हूँ, who will promise to pay maximum rent through auction। अब देखो मेन गोल क्या है? मेन गोल was to increase the land rate and collect land revenue on time। ज्यादा पैसा मिले और टाइम पे मिले, to increase the land revenue and to get more land revenue on time। this is what कंपनी यही कर सकती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कंपनी। द कंपनी विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यूज, कंपनी यही कर सकती है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 5 year सेटलमेंट, it was seen that the rich people got leases। लीज में ऑक्शनिंग कौन कर पाएगा? द रिच पीपल गॉट द leases by calling more auctions than the traditional zamindars, and now zamindars became pensioner। उस एरिया की जमींदारी कोई बड़ा बिजनेसमैन ले लेगा और कुछ पेंशन किसको दे देगा? जमींदार को। जमींदार हैड बिकम पेंशनर। ओके, नाउ द जमींदार्स कॉल फॉर extravagant auctions to get a 5 year lease। Inhumane treatment was inflicted on the rayats। Rayats means peasants। To collect rent, so many rayats fled their homes। It means in collection of land revenue, why what you are doing? You are using forceful and coercive means in the collection of land revenue, ठीक है ना? You are using what? Forceful and coercive means। Now, looking at this entire structure, tell me what is the basic purpose? And one more thing, that when this 5 year settlement ended in the year 1777, what Warren Hastings did? Okay, so he made it what? Yearly। After this was made what? Yearly settlement। Annually कर दिया गया, yearly कर दिया गया, right? And here also the peasants were oppressed। 5 year settlement में भी, okay, who was oppressed? The peasants were oppressed। 1 year settlement में भी, who were oppressed? The peasants were oppressed। Got it? So this is the idea। समझ में आया? वॉरेन हेस्टिंग्स, इजारा, पंचशाला, 1 year settlement। अब रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। ओनली यू विल हाईलाइट इंपॉर्टेंट ईयर्स इन योर नोट्स विद द हाईलाइटर और एक बार क्विक रिवीजन बस। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज रैयतवाड़ी, सॉरी, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। क्लियर? यस प्लीज। हम्म, एग्जैक्टली। देखो, व्हेन वी से जमींदार्स ना, तो इट्स नॉट यूनिवर्सल। some zamindars will gain profit, some zamindars will face loss। which zamindars will get profit? जो zamindar हैं at the same time they will become traders also, and they will become important associates of ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जमींदार ने कहा अपने बेटे को, अब तुम जमींदारी नहीं करोगे, अभी मिस्टर जॉन मेरे घर आए थे, चाय पी के गए, उनके साथ तुम लग जाओ, बिजनेस सीखो।
अब समझ गया ना, देयर वर टू क्लास ऑफ जमींदार्स, वन वी विल गेट बेनिफिट्स, कैसे बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज नाउ देयर फैमिलीज आर अडॉप्टिंग मॉडर्न मीन्स बिजनेसेस, और जो दूसरा जो ट्रेडिशनल जमींदार है, ठीक है, उसका क्या होगा, धीरे धीरे विल डिक्लाइन। क्लियर, दिस विल हैपन, इतनी सी बात है। गॉट द आंसर आकाश? और जितने भी डाउट्स आए पूछो, ठीक है। इट इज बेटर टू स्पेंड 10 आवर्स इंस्टीड ऑफ 6 आवर्स वंस वी आर एबल टू डेवलप 100% कमांड। इस तैयारी का ये मंत्र हमेशा याद रखना, कोई भी चैप्टर पढ़ो, रीड वन चैप्टर ऑफ पॉलिटी, बट दिस शुड बी योर कमिटमेंट कि वंस आई हैव फिनिश्ड वन चैप्टर ऑफ पॉलिटी, I am confident about this chapter. I can solve any PYQ. I can write any answer from this chapter. Then you will find that the syllabus is easy. ठीक है? It's better. We will not be able to finish one chapter in 2 days. We will read one chapter in 10 days. But that should be the criteria. ठीक है? और तभी आप शायद चीजों को समझ पाओगे, ओपिनियन को समझ पाओगे. Now we are coming to this system, that is permanent system of settlement. Okay. In this system of settlement, now the main why it was named permanent and why it is called zamindari, this we need to understand. But before this we need to understand is that who introduced this system in India. Introduced this system in India, very good, this can be prelims question. Lord Cornwallis introduced this system in India, okay. And Lord Cornwallis, the time period of Lord Cornwallis is 1786 to 1793. That is the time period of Lord Cornwallis, 86 to 93. यही टाइम पीरियड है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस का, 86 to 93. Now what we see here is that Warren Hastings, what is the time period, थोड़ा रिलेट करो चीजों को, 1780 82 to 85, नहीं 1772 to 1785, और इसके बाद क्या आ गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रिप्लेस्ड हुम, वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स किस लिए आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्यों भेजा गया कि भाई वॉरेन हेस्टिंग्स से जो नहीं हो पा रहा है वो तुम करो. ही वॉज ऑल्सो सेंट टू ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. तो क्या ये टॉपिक हमें अलग से पढ़ना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस? यस, अलग से पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So Cornwallis was also sent in India to bring administrative reforms. Cornwallis was also sent in India to bring administrative reforms. Administrative reforms लाने के लिए भेजा गया, right? Sent to bring administrative reforms. And here we are going to discuss only land revenue system of administration. That which reforms were introduced by Cornwallis here. Only one aspect we are going to discuss, that, okay, that which reforms were introduced by Cornwallis here. This part we are going to discuss, okay. केवल यही part discuss कर. So now we are going to discuss here land revenue system of administration, okay. It's called zamindari. इसका मतलब क्या है, that देखो सबसे पहले when Cornwallis came to India there will be a problem, okay. He saw that since this Warren Hastings model was also criticized. Warren Hastings model was also criticized a lot. Also criticized a lot because it was, you can say that its impact can be seen on the peasants. Peasants started fleeing and leaving their homes and all this. When Cornwallis came, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, सबसे पहले अगर लोग नाराज हैं, ठीक है, तो उनको बताता है कि आपकी नाराजगी जायज है, योर कंसर्न्स आर वैलिड, ओके. नाउ कॉर्नवालिस विल से दैट द कंसर्न्स ऑफ द पीपल आर वैलिड, द कंसर्न्स ऑफ पीपल आर वैलिड, एंड ही विल से दैट we are going to introduce we are going to introduce we are going to introduce a new model. We are going to introduce a new model, and this model is already in practice in Britain. Already in practice in Britain.
इसने कहा कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल एंड दिस मॉडल इज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस इन ब्रिटेन. ये मॉडल तो ब्रिटेन में पहले से ही प्रैक्टिस में. इट मीन्स दिस इज द ब्रिटिश मॉडल विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया. ओके, दिस इज वाई to convince the people of Bengal. He is saying that this is a British model. He will say that in Britain there are landlords. वहाँ landlords हैं. Okay, and we have given the responsibility of collection of land revenue to these knights, lords, or the landlords, and we are going to introduce the same system here in India. And what he will do? Okay, so he will select some areas that are some particular areas, right? And these areas are Bengal, Bihar, read this, Odisha, Bengal, Bihar, Odisha, Bengal, Bihar, Odisha. Okay, some areas of UP, some areas of UP, that is United Province. We can write some areas of United Province, UP today. Okay, some areas in Karnataka, particularly north part. Okay, so the northern part of Karnataka, northern part of Karnataka, some areas in Karnataka. Okay, what he did, he selected some areas. Okay, and which particular areas were selected? This is the question, that which particular areas were selected. So he selected those particular areas where the powerful landlords or zamindars were present. जहां पहले से ही देखो, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हर जगह जमींदार हुआ करता था, नहीं. The system was very much diversified. So he will select only those areas where powerful zamindars were present, where powerful zamindars were present. He will select only those areas where powerful zamindars were present. Powerful zamindars were present. And here what will happen? Okay, for the collection of land revenue, for the collection of land revenue, EIC will, okay, do settlement, or EIC will do settlement with a particular class, and this particular class is zamindar class or big landlords. Zamindar class or big landlords. Okay, big landlords. This agreement will be signed with a particular class, that is zamindar class or big landlords. Zamindar class or big landlords. Okay, and what does it mean? It means that suppose you are a zamindar in this particular area, so it will be your duty to collect land revenue from this particular area, and you will submit this land revenue to the East India Company. Okay, so what was the task of zamindar here? The task was to collect land revenue, from his particular zamindari area, from his particular area of control, or influence. Okay, to collect land revenue from his particular area of control and influence. जहाँ उसका control है, जहाँ उसका influence है, to collect land revenue from that particular area, and to submit this land revenue to EIC, and to submit this land revenue to EIC. EIC को land revenue submit करना. Okay, this was the task. Now, कोई काम free में तो करेगा नहीं. Okay, so what is the benefit that zamindar will get? Read this. Benefits for zamindars. What are the benefits for zamindars here? तो जमींदार का पहला बेनिफिट क्या है? He will get share of land revenue. He will get share of land revenue. This is the benefit for zamindar. He will get share of land revenue. It means land revenue will be divided among two entities. Okay, land revenue will be divided here. It will be divided among two entities. One is East India Company and the second is zamindar. Land revenue will be divided here. East India Company will get the largest share. East India Company will get the largest share, and it will be 10 upon 11, and zamindars will get the least share. Zamindars will get the least share, and it will be 1 upon 11.
Zamindars will get the least share. It will be 1/11. And this is the problem. Britain में तो मॉडल यही था, but in Britain zamindars were getting more share. In India, zamindars are getting a very meager, very less share, that is 1/11. Okay, and East India Company is getting the largest share, 10/11. Now, what is the third and the most important point? What is the next benefit for zamindar here? Read this. Next benefit for zamindar. जमींदार का अगला बेनिफिट, और यहाँ पे पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहो. हियर आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स. एंड मुगल सिस्टम, मुगल रूल में क्या था? ओके, तो मुगल रूल में इट वाज हेरिडिटरी और नॉन हेरिडिटरी. द राइट्स वेर नॉन हेरिडिटरी प्लस द राइट्स वेर ट्रांसफरेबल. It was in Mughal. During this 16th to 17th century, the rights were non-hereditary and transferable. And here, EIC rule में क्या होगा? Cornwallis will do what? Yes. नहीं, यही मैंने बताया ना, यहाँ पे प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझना. हेरिडिटरी एंड इट विल बी ट्रांसफरेबल. यही तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बो है, यही तो आपको बताना है. दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स क्वेश्चन. Be very alert here. Cornwallis will make the rights of these zamindars hereditary and transferable. Hereditary and transferable. और ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या हुआ. ठीक है, ये तो कॉकटेल बड़ा खतरनाक है. Hereditary and transferable. How it will happen? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी will say that your zamindari rights, okay, will be granted for permanent. पहली चीज. Plus, for example, what was the general pattern? That in a village, one person was zamindar and he was controlling largest share of land. ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? British are going to distort our traditional land distribution mechanism. और ये प्रॉब्लम आगे जाके जुड़ जाती है नक्सलवाद की प्रॉब्लम से. यहीं से नक्सलवाद का जन्म हुआ. Okay, what was the system here? Suppose you are the zamindar, so you are controlling largest land holding ना, आपके पास सबसे ज्यादा जमीन है, इसीलिए आप क्या हो? जमींदार हो. But in villages there are other people who are having their own lands. लोगों के पास खुद की भी जमीन है. Okay, and in India no any peasant was landless peasant. This was the traditional culture of India. हर किसान के पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी. No any peasant was landless peasant. It means each and every peasant were possessing some amount of land, right? It means they were independent peasants. All peasants were having or possessing some amount of land. They are the independent peasants. And what about this zamindar? Zamindar was having ownership over, he was having ownership over large land holdings, and he is zamindar of this particular village. The name of this village is A. Now East India Company will say what? Lalach, dena. EIC will say that now we will treat you. You are already zamindar of this village. Now East India Company gives you the ownership of land of this entire village. Now we will consider you the master or owner of this land. यानी अब जमींदार केवल इस एरिया का मालिक नहीं है, he is the owner of this entire land. पहले जमींदार नाराज होगा, कहेगा ये क्या मजाक करो, share of taxes we are getting 1/11 only. EIC will say that घबराओ मत, we are going to accept you as the owner of this entire area. It means now you are the owner of this entire village. You are the owner of this entire land holdings. जमींदार फंस गया बेचारा. उसने कहा जाने दो, शेयर कम मिल रहा है लेकिन मालिक तो मैं ही हूं. ध्यान से समझते रहो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एक्सप्लॉइट किया इंडिया को. जमींदार्स को कंफ्यूज कर दिया. ऑन वन साइड दे ऑफर्ड लेस शेयर, जमींदार वाज वेरी डिससेटिस्फाइड. दूसरी तरफ खुश कर दिया, कहा यू आर गिवन ownership of this land. You are given ownership of this land. जमींदार खुश. जमींदार ने कहा अगली बात मैं कल करूंगा, अभी मैं पार्टी करने जा रहा हूं. I have got the ownership of this entire land. अगले दिन पार्टी वार्टी करके जमींदार आएगा. Now जमींदार will ask,
that my rights are hereditary or not. किसी ने कहा होगा अरे अंग्रेज बहुत चालाक हैं, थोड़ा अलर्ट रहो, जाके पूछो तुम्हारे राइट्स हेरिडिटरी हैं कि नहीं. नाउ जमींदार विल आस्क माय राइट्स आर हेरिडिटरी और नॉट, माय सन्स एंड डॉटर्स विल बिकम द जमींदार्स और नॉट. ईस्ट इंडिया कंपनी विल से दैट भाई योर राइट्स आर हेरिडिटरी. इतना नाराज हो के क्यों आए हो? जमींदार कहेगा मैं फिर पार्टी करने जा रहा हूँ, अब कल आके बात करूंगा. फिर दोबारा पार्टी करने जाएगा. फिर कोई दोस्त बताएगा, कहेगा यार अंग्रेजों से बच के जाके फिर से पूछो कि तुम्हारे राइट्स ट्रांसफरेबल हैं कि नॉन ट्रांसफरेबल हैं. Now next day zamindar will come and will ask, my rights are transferable or non-transferable? East India Company will say that it is transferable. How is it possible? The rights are hereditary and at the same time it's transferable. East India Company said terms and conditions. जैसे इंश्योरेंस कंपनीज वाले लिखते हैं terms and conditions. Company will say that if you will keep submitting the land revenue on time, okay, if you have collected land revenue and has submitted the land revenue on time, okay, then you are the owner of the land. It will become hereditary. But once you fail to collect land revenue and submit land revenue on time, so terms and conditions will apply. And what is this terms and condition? The terms and condition is sunset law. क्या कहा? Sunset laws will apply. And what is sunset law? If you fail to pay or submit the land revenue on the fixed deadline, if you fail to pay this land revenue on the fixed deadline or the fixed time, what will happen? Your zamindari rights will be lapsed. Your zamindari rights will be lapsed. Your zamindari rights will be lapsed. आपकी जमींदारी राइट चली जाएगी. और फिर समझाया, कहा कि जमींदारी राइट चली जाएगी मतलब आपकी खुद की भी जमीन चली जाएगी. You are now owner of this entire land. Now when your zamindari rights will be lapsed, what will happen? आपकी ओनरशिप इस पे भी नहीं रहेगी. Your zamindari rights will be lapsed. So zamindar will ask, what will you do the next? Cornwallis will say that we will follow the method of Warren Hastings, auctioning. We will auction the zamindari rights. We will auction the zamindari rights, and those who will offer the highest bidding amount, we will sell the zamindari rights to that person. मेरी बात समझ गए? कितना खतरनाक है प्लान? Is it reform in the land revenue system of administration? क्या ये reform है? नहीं. Got it? Is the topic clear? That the settlement was done with zamindars. Task of zamindar is to collect the land revenue and submit it to the East India Company, and zamindar will get the share. Largest share will be given to EIC, that is 10 upon 11. Least share will be given to zamindar, that is 1 upon 11. Zamindars were not happy by this. Now what EIC will say, that okay, we are also giving you what? Ownership rights, zamindari rights along with the ownership rights of this entire area. Now you are the owner of the land. Now zamindar was very happy. East India Company says that this right is hereditary, but under some terms and conditions. If sunset law will apply, then the rights become transferable. Is it clear? If you fail to pay land revenue on time, then okay, we can take these rights from you. We can auction this land, and this can be sold to the other zamindars. This can happen. ये हो सकता है. ठीक है? And in this way, this was applied in some particular areas, only those areas where what was the where the powerful zamindars were present. Okay, the areas where I have already discussed: Bengal, Bihar, Odisha, some parts of United Province, some parts of South India also, especially Karnataka region, northern part of the Karnataka region, where powerful zamindars were present. Overall, this model was applied on 19% of the British area, ब्रिटिश इंडियन एरिया. ब्रिटिश के पास जितना भी लैंड था, जितना भी एरिया पे इनका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस था, उसके 19% पर दिस मॉडल वाज अप्लाइड. ठीक है? दिस मॉडल विल अप्लाई on 19% area. Okay, now what will be the consequences? What will be the consequences? Or yes, please.
Exactly. Actually, the British will do what? In order, this was an attempt to appease the zamindars also. Clear? That when zamindars will get this opportunity that they are now owners of this entire land or the area, so they will support East India Company in future. They may emerge as the support, you can say that loyal supporters of British rule in India. This was one objective, because there was the lack of manpower. I have already told you that, and company is basically a trading company, business company, so they will try to save their expenditure also. Obviously, they will give some more privileges to the zamindars, but these privileges will vary. It's not universal. That's why I did not discuss with you. For example, that in zamindars also there are different class of zamindars. Na? Some are very powerful. So British will negotiate with the powerful zamindars. They will say that आप का जो खुद का जमीन है उस पे मत दो. But in case of small and petty zamindars, what they will do? They will change the rules. But that is not asked in exam. Okay, so this is the basic structure that is asked in exam. Got it, Akash? Okay. Now, consequences. So what will be the consequences? तो देखो इसमें एक consequence सबसे पहले बता रहा हूँ कि for example suppose you are the zamindar and you have got the zamindari rights. Okay, you have got the ownership rights here, or the ownership rights will lie with the zamindars of this particular area, but you failed to submit land revenue on time. You failed submit लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम आप नहीं पे कर पाए. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सनसेट. Exactly. Here, which law will be applied? Sunset laws will be applied. This concept is very important. That's why I'm discussing you. Sunset laws will be applied. And after this application of sunset law, the zamindar will lost his zamindari rights. Now, what will happen? This zamindari rights of this entire area now will be sold. It will be sold. Okay. And the method is what? Auction. It means auctioned. The rights will be auctioned. So in this auctioning, okay, businessmen, you can say that traders, merchants, okay, different groups can participate. Different groups can participate. Now suppose this is the zamindari right of a particular village nearby to Lucknow. मान लेते हैं लखनऊ के आसपास का है. So here the people who are taking part in this auctioning, they may come from Gujarat also, MP also, Karnataka also. कहीं से भी आ सकते हैं. The people are open to come. They come from Manipur also. Okay, so here what will happen? Businessman will come. Businessman from different parts of India will come. Businessman from different parts of India will come. Suppose a businessman comes from, okay, just take this example that a businessman is coming from Kerala, Kerala, and he has offered the highest bidding amount. Businessman coming from Kerala has offered the highest bidding amount. In that case, now what will happen? Okay, he will got the zamindari rights. Businessman of Kerala has got the zamindari right. Now what will happen? Will he stay here? No. He will return back to Kerala and he will appoint his representative. एक आदमी को salary पे रख देगा that collect the land revenue from this particular area. He will appoint one person, okay, and he will pay salary to that person or share, and he will collect land revenue. That is what? Representative. This might be possible that I am the representative and you are the zamindar of, you are the businessman of Kerala. आपने ये task मुझे दिया. मैंने क्या किया? I have further appointed another person. मैंने देखा मालिक आता नहीं है, तो मैंने किसी दूसरे आदमी को नौकरी पे रख लिया. जैसे आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल में टीचर करते थे, वो टीचर हो जाते थे, सैलरी लेते थे और आधी सैलरी पे किसी और को रख देते थे स्कूल. अब तो ऐसा नहीं होता है.
but this was happening here. Okay, so the same was happening. It means what is happening? The main zamindar now is what? Okay, is not a local of that area. He has returned back. The kind of the sentiment which the local zamindar was having with the local peasant, that sentiment will be lost. Traditional zamindar kya karte the? They used to help the local peasants. Okay, when there is a marriage in their home, when there is some other problem, they used to help those people because there was a traditional relation coming from the centuries. That relation will be disturbed. ये तो बिजनेसमैन है, इसको क्या फर्क पड़ता है आपकी बेटी की शादी है तो? मेरी बात समझ गया ना? बट पुराने जमींदार को फर्क पड़ता था. इफ देर इज फेमाइन, इफ देर इज ड्रॉट, तो देर वॉज अ ट्रेडिशनल रिलेशन. पुराने जमींदार को फर्क पड़ता था कि अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आपसे पैसा नहीं लेगा, नहीं तो उसकी इज्जत चली जाएगी. ठीक है, उसको मेंटेन करना है. गॉट इट? ओके, सो जमींदार हैज आल्सो बीन पेंटेड इन वेरी ओके बैड पिक्चर. 70s की फिल्मों में तो जमींदार को हमेशा गलत ही दिखलाया गया है, बट अच्छे जमींदार भी थे इंडिया में. देयर वाज अ गुड रिलेशन बिटवीन द जमींदार एंड peasants also. Now this zamindar is not having that good relation. He has appointed his representative. This representative has further appointed another representative. So this entire system is known as sub-infeudation or absentee landlordship. Okay, so this problem is known as absentee landlordship. This problem is known as absentee landlordship. And what is sub-infeudation? One zamindar has recruited another zamindar, another zamindar has recruited another zamindar. So this channel is known as sub-infeudation. This is known as sub-infeudation, right? One zamindar has represented another as his representative, another has represented or recruited someone else. So this is what? Okay, a kind of sub-infeudation. So absentee landlordship and sub-infeudation will do what? Is increasing the number and role of intermediaries. Sub-infeudation में कौन बढ़ रहा है? Intermediaries. It's increasing the number and the role of intermediaries. So what will happen? Intermediaries का नंबर जब बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? करप्शन. और उस करप्शन का बर्डन अल्टीमेटली कहाँ पड़ेगा? ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पीजेंट. अगर एग्जैक्टली पीजेंट अगर आप पीजेंट हो और ऑन टाइम नहीं रिवेन्यू दे पा रहे हो तो रिप्रेजेंटेटिव कहेगा देखो भैया 1 मंथ बाद मैं आके ले जाऊंगा लेकिन इतना पैसा ज्यादा लूंगा. इज इट पॉसिबल? ओके, so yes, so write this corruption. Okay, corruption will increase. Okay, and the ultimate burden will lie on the shoulder of the peasants. Ultimate burden will lie on the shoulder of the peasants, and the ultimate burden will be on the shoulder of the peasants. Ultimate burden peasants पर ही होगा. Ultimate burden will lie on the shoulder of the peasants. Now, impact on zamindars. Yes, impact can be seen on zamindars also. Impact on zamindar. क्या impact होगा समझो इस बात को. If you are a good zamindar, so what will happen? If you are having good relation with your village members, okay, if you have maintained traditionally good relations, अगर आपके good relations हैं, and if there is some famine and drought, or if the peasant is in any financial difficulty, what will happen? If there is famine and drought, you will give relaxation. You will not collect the land revenue in forceful manner. You will not use coercive methods to collect the land revenue. आप बल प्रयोग नहीं करोगे, जबरदस्ती वसूल नहीं करोगे. And what will be the long term impact of this? You will not be able to submit all the land revenue on time. शेयर भी आपका बहुत कम है. इट इज 1/11. अगर ये 50-50 होता तो आप अपनी जेब से कुछ डाल देते, बट आपके पास शेयर इतना है ही नहीं. ठीक है, 1 year, 2 year, 3 year you can do this with your savings, but उसके बाद क्या होगा? Ultimately one day you will fail, and that was happening. The good zamindars failed since they were sympathetic. The good zamindars were what? Since they were sympathetic for the needs of their own people, needs of their local people, so they failed to submit land revenues on time.
since they were very sympathetic. So they failed to submit the land revenues on time. On time land revenue को submit नहीं कर पाए. They failed to submit land revenues on time. This happened. Got it? They failed to submit land revenue on time. So what will happen? Sunset law will be applied to them. Sunset law will be applied to them, and what will happen? They will lost their zamindari rights, and now they are the displaced zamindars. Now they are the displaced zamindars. This word displaced zamindars is used for such kind of zamindars. Now they are the displaced zamindars. Got it? कितना आसान concept है. They are the displaced zamindars. Now when peasant revolts will take place, so these displaced zamindars will emerge as the leaders in those peasant revolts. ये भी ध्यान रखना है. When revolt of 1857 take place, peasants will support that revolt, and displaced zamindars will also support that revolt. So you can write this, that in case of some peasant revolts, displaced zamindars, in case of some peasant revolts, these displaced zamindars, in case of some peasant revolts, these displaced zamindars, okay, in case of peasant revolts, these displaced zamindars emerged as leaders in those revolts, these displaced zamindars emerged as leaders in those revolts. They emerged as leaders in those revolt. Write one more point, that in revolt of 1857 also, these displaced zamindars played important role. In revolt of 1857 also, these displaced zamindars played important role. Now, what about bad zamindars, whom we are calling bad zamindars? ठीक है? Oppressive zamindars, you will write this point, oppressive Indian zamindars, or bad zamindars, or oppressive Indian zamindars. Those who were not sympathetic, to the needs of Indian people. Those who were not sympathetic to the needs of Indian people were bad zamindars. Right? Those who were not sympathetic to the needs of Indian people were bad zamindars. So what they will do? They will collect the land revenue with forceful means, by coercive means. They will not compromise, and they will submit the land revenue on time. Okay? So this will happen. So write this. Okay, they will use brutal methods or coercive means to collect land revenue from the peasants. They will use brutal methods, okay, for the collection of land revenue. Brutal methods or coercive means. Dekho, they have appointed latials. This many standard books have written these words, L-A-T-H-I-A-L. Latials means latath. Okay, they will appoint latials, okay, to use or to torture peasants so that land revenue could be collected. So forceful means they will be able to submit. Plus they will also do what? They will start supporting or assisting EIC officials in trade and commerce. Okay, write this point, that they also started supporting and assisting EIC officials. They also started supporting or assisting EIC officials. They also started supporting or assisting EIC officials in their trade and commerce. They also started supporting or assisting EIC officials in their trade and commerce, and they emerged as most important associates, and they emerged as most important associates, or
loyal supporters of presence of EIC rule in India, and they emerged as, okay, loyal supporters of presence of British rule in India. Have you written this? Okay, loyal supporters. So what will happen in revolt of 1857? British were supported by this class of zamindar. ठीक है ना? Operative zamindars, bad zamindars मत लिखना. ठीक है? Operative zamindar is a good word. ठीक है ना? So write this: in revolt of 1857, British were supported and protected by this class of zamindar. तो सारे जमींदार बुरे थे हम ऐसा नहीं कह सकते. We cannot universalize any fact, any information, right? So British were supported by this class of zamindar. This class of zamindar. Okay. Now you have related this concept, zamindar issue. Now what will be the impact on peasants? Peasants पे क्या impact होगा? आप खुद ही बताओ क्या impact होगा? Adverse. Okay. All the burden is on the shoulder of the peasants. So the peasants पे क्या होगा? Adverse effect. Okay. Land revenue rates were fixed very high. Land revenue rates were fixed very high. No relaxation were given. No relaxations were given. Okay. Even in case of droughts and famine. This was the question in UPSC 2024 prelims. 2024 prelims. Okay. So even in case of droughts and famines, relaxations were not given. In case of droughts and famines, relaxations were not given. Land revenue rate पहले से ही high है. Okay. No, you are getting no relaxation. So what will happen? Okay. Now agriculture will not be profitable. Now agriculture will not be profitable. Now the peasants will not be able to manage 2 meals a day. 2 meals a day, right? The agriculture was not profitable and the peasants were not able to manage 2 meals a day. Agriculture was not profitable. खेती अब उतनी profitable रह नहीं गई थी, right? Okay. They were tortured. Okay. Brutal and coercive methods, okay, were used. So they were tortured. And what about the role of intermediaries? Okay, the role of intermediaries increased, and this added to the exploitation of the peasants, right? The role of intermediaries increased, and this added to the exploitation of peasants. Okay, role of intermediaries will increase, and this will add to the exploitation of peasants. And the most important challenge is what? Previously, the peasants were independent peasants. Now, they are the tenants on their own land. कितना बुरा लगेगा अपने ही घर में किराया देके रहना पड़े तो. ठीक है, यही हुआ उनके साथ. Okay, so now their independent status was lost, right? This now the peasants were not independent peasants. They were the tenants on their own land. They were the tenants on their own land. The peasants were not independent peasants. They were the tenants on their own land. Okay. They were the tenants on their own land. What about the traditional distribution of land? That traditional system was disturbed or not? Distribution of land, yes. ठीक है. लैंडलेस क्लास इमर्ज कर गया. लैंड विल बिकम अ सेलेबल कमोडिटी. ठीक है, सेलेबल कमोडिटी हुआ कि नहीं? ऑक्शनिंग किया जा रहा है, नए बिजनेसमैन आ रहे हैं. जब बिजनेसमैन को लॉस होगा तो वो अपनी राइट किसी और को बेच देगा. तो लैंड वाज नेवर अ सेलेबल कमोडिटी इन इंडिया. नाउ लैंड हैज बिकम अ सेलेबल कमोडिटी. Okay, the traditional land structure was disturbed. So write this: land became a sellable commodity now. Land became a sellable commodity now. Land became a sellable commodity now. Okay, land became a sellable commodity now. Okay, and the next point is the traditional structure
or pattern of land distribution was also changed or transformed as a result. The traditional structure or pattern of land distribution was also changed as a result. Okay, was also changed as a result. And right, the consequences can be felt till today, and the consequences of this system, okay, can be felt or realized till date. Consequences can be felt or realized till date. Why I am saying this? Naxalism, 1970s, from a village, Naxalbari village in Bengal. It started as a conflict between the landless class of peasants and the powerful landlords of that particular area. After independence, the government, okay, tried to ensure this system, okay, to correct this land distribution, okay, pattern. For that, land Jamindari Abolition Act was also introduced, but it was not applied properly. It could not be implemented in an effective manner. So 1970s, what we see that from Naxalbari village, a conflict start. This was a conflict between the landless class of peasants and the landowners. But gradually, this conflict will change its direction and orientation. Okay, those actors will involved, and they will start this platform to create internal security threats or challenges for the India. And it was supported by some foreign actors also, who want to create unrest, problems in our country. And gradually it emerged as one of the biggest internal security threat or challenges. So the movement changed its orientation. Now it's not the struggle or conflict of the peasants. ठीक है, अब इसमें क्या हो गया है? Okay, many new elements are there, and they are using these innocent people, okay, to fulfill their agenda. And the agenda is what? To bring unrest in our country, okay, to make the country weaker from within, so that, okay, they could gain strategic benefits out of this. Clear? So who gave birth to this problem? British. ठीक है, तो ब्रिटिश ने जो भी सिस्टम में चेंजेस किए, क्या उन्होंने इस बात को देखा इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? व्हेन ब्रिटिश हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, क्या उन्होंने देखा कि इन फ्यूचर दिस द ओरिएंटेशन कुड बी चेंज लाइक दिस, दैट एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की मांग होने लगेगी? नहीं. दे ओनली ट्राइड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. They only tried to promote their selfish interest. They only tried to increase their profits in India, and for that, whatever was needed, they did. And this is colonialism. Whatever will be done in colony, the ultimate objective is to provide gains or benefits to the mother country or the parent nation. So I have told you that this entire chapter is like a battleground. Now let's look at some slides so that we could get some new facts or information, and we will be able to revise the theme also. Now this is the slide. Are you getting this slide on the screen, Akash? Okay, Yashashwini? Right. Now you will be able to relate. अब slide का importance समझ में आया ना? ठीक है, केवल स्लाइड से पढ़ाऊंगा तो नहीं आप उतना इफेक्टिव सीख पाओगे. सो दिस इज यूज टू सेव टाइम एंड टू रिवाइज. ठीक है, ये पढ़ने के लिए नहीं यूज किया जाता है. ठीक है, दिस इज यूज टू सेव टाइम. नहीं तो फिर क्या होगा? नाउ द बुक लाइन्स ऑफ बुक आर ऑन द स्क्रीन. ओके, एंड इफ एज अ टीचर आई विल स्टार्ट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द बुक, so what is the worth of the classes? बुक तो आपके सामने है ना, कंटेंट इज ऑलरेडी देयर ऑन द इंटरनेट. कुछ भी नया मैं थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ. राइट नाउ, Cornwallis, what I have written here, it was a landlord based system. It means the settlement was done with the class of landlords. तो हमेशा याद रहेगा, that's why this is also known as जमींदारी बंदोबस्त. ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जमींदारी बंदोबस्त. Okay, now Cornwallis' greater achievement in India was the reorganization of the land taxation. Other tasks of administrative reforms were also there,
but this was one of his most important tasks, and this is known as permanent settlement, okay, of 1793. So here is what 1793. Agricultural land in Bengal was cultivated by large number of small farmers who paid rent to a group of zamindar or landowners. So the same group will be chosen, okay, for this settlement. Under the Mughals, the government had collected taxes from the zamindars, right? The EIC, however, had tried to set aside the zamindars and collect land taxes either directly through company officials or through revenue farmers. It was about the previous topic that we discussed, who collected the rent from the peasants and paid a lump sum amount to the government. So this model was there during this period, 1765 to 1772. Okay. Then what happened? Okay, the new system introduced by Cornwallis was introduced because here the widespread corruption and the peasants suffering, okay, severity. It means previous system the peasants had a lot of complaints कि system अच्छा नहीं था. Cornwallis decided to go back to the old Mughal system. He granted the legal ownership of land. If the question is asked, ownership of the land was given to the zamindars, you will say that yes, it is correct. ये ध्यान रखना, ownership दूसरा, hereditary तीसरा word, transferable. Always take care of these words. Ownership given to the zamindars. In return, they had to pay the government 90% of the rent. Obviously, the share was like this, 10, 11 or 1 upon 11. So it was almost 90% to the government, which they collected from the farmers. These arrangements last forever, hence title permanent settlement. ठीक है ना? So that is why it is called permanent settlement. Lord Cornwallis was given the task of reforming British administration, establishing good relation with the Indian princess. He had a lot of tasks to do. He set up an independent judicial system. Cornwallis prevented the company's government servants from conducting private trade. I will discuss it later. Other reforms में इसने corruption को रोका, company officials के private trade को भी he tried to stop this by holding government contracts and reform the police and criminal justice system. So this part we will discuss later. This is a question here. You can write a question, right? Question लिख लो. I will discuss. These two are the most important question. Question number 1. Discuss the administrative reforms introduced by Warren Hastings in India. This is one question. I will discuss it later. There will be a separate chapter for this, right? Discuss the administrative reforms introduced by Warren Hastings in India. Discuss the administrative reforms introduced by Warren Hastings in India. And the second question is discuss the administrative reforms introduced by Cornwallis in India. Discuss the administrative reforms introduced by Warren Hastings in India, and discuss the administrative reforms introduced by Cornwallis in India. These are two basically themes that we need to discuss. ऐसे ही there are some other personalities like Lord Mayo, Lord Ripon, Dalhousie, William Bantic, ठीक है, Canning. So we must know about all these administrators. They were one of the good administrators of that time. Lord Cornwallis is famous for dealing with Tipu Sultan. ये तो हमें पता ही है. What is the time period of Lord Cornwallis? 86 to 93. Okay. और आपको याद आ रहा है एंग्लो मैसूर वॉर. फर्स्ट 67 to 69. सेकेंड 80, 84. थर्ड 1992. थर्ड में कौन डील कर रहा था? टीपू सुल्तान. और टीपू सुल्तान was defeated or not? Yes, he was defeated. उसके sons were taken hostages, half of the territories he left. और फाइनल डिसिसिव वॉर कब हो रहा है? 1799. तब तक कॉर्नवालिस जा चुका है, बट टीपू सुल्तान को कमजोर किया ना, इसी ने तो किया, कॉर्नवालिस. So that is very important. Third Anglo-Mysore War. Okay, Cornwallis led this Third Anglo-Mysore War. Got it? Okay. So these are some of the facts and information. I think that these are added facts and informations. Okay. So you can relate. You can get some idea कि कैसे इसको हम आगे relate करके पढ़ सकते हैं. Got it? Now
The next model is Rayatwari system of settlement. Write this, Rayatwari system of settlement. That is the third model. Second है ना, third important में आ जाता है. This is Rayatwari system of settlement. Rayatwari system of settlement. Clear? Right. It was introduced by, it was, देखो अब इसमें भी क्या है, yes, Reed and Munro. The name is Reed and Munro. Reed and Munro. तो देखो Reed did what? Reed first introduced it on an experimental basis. सबसे पहले क्या किया? Experimental basis पे इसको introduce किया था. Experimental basis in 1792 in some particular areas. It was first introduced in on experimental basis in some particular areas in 1792. एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया 1792 में इन सम पर्टिकुलर एरियाज. ठीक है, जैसे पायलट प्रोजेक्ट होता है ना, इन द सेम वे. ओके, देन ही डिड व्हाट, राइट, इन 1820 the model was applied to wider area or larger area. The model was applied to wider area or larger area in 1820. So Reed and Munro introduced. Okay, later it was applied to wider area or larger area, 1820. It was applied to, okay, areas like, right, which are the selected areas here? So right, like Madras, that is South India, some parts of South India, right, some parts of Deccan region, some parts of Bengal, some parts of Northeast, and some parts of South India. Some parts of Bengal, some parts of Northeast, some parts of South India. किस एरिया में अप्लाई हुआ, टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा. गॉट इट? सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ओवरऑल इट वाज अप्लाइड टू 51% of area that was under British rule. Overall it was applied to 51% of area that was under this British rule. ओवरऑल कहाँ तक अप्लाई था ये? 51%. ठीक है, इट वॉज अप्लाइड टू 51% ऑफ एरिया. वेयर इट वॉज अप्लाइड? नाउ दिस इज द क्वेश्चन. देखो, देयर वेर सम एरियाज वेयर पावरफुल जमींदार्स वेर प्रेजेंट, तो इट वॉज ईजी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू सेटलमेंट विद देम, कि उनके हेल्प से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लो. बट देयर वर मेनी सच एरियाज इन इंडिया वेयर दिस पावरफुल क्लास ऑफ जमींदार्स वॉज नॉट प्रेजेंट. So here you don't have any other option. You will have to do this settlement with the rayats or the peasants themselves. So the same happened here. You can write that rayats, write this. Okay, the areas where powerful zamindars were absent. It was applied to those particular areas where powerful zamindars were absent. It was applied to those powerful areas, those particular areas where powerful zamindars were absent. ठीक है, वो particular area जहाँ पे कि powerful zamindars नहीं थे. Got it? Now what does it mean? Applied to those areas where powerful zamindars were absent. So here it was a settlement that was done with individual peasants or the farmers, and the word for them is rayat, right? It was a settlement done with individual peasants or farmers. It was a settlement that was done with individual peasants or farmers, that is known as rayats. ये rayats के साथ settlement हुआ, and that is why this is known as Rayatwari settlement. Rayatwari settlement. Okay, Rayatwari settlement. और देखो, ये सेटलमेंट में भी ईस्ट इंडिया कंपनी इज इनहेरिटर और इनोवेटर. तो द आंसर इज इनहेरिटर. हाउ? तो देखो, शेर शाह सूरी हैज अडॉप्टेड अ मॉडल. Akbar also introduced the important elements of that model in his land revenue system of administration. Todarmal system जिसको कहते हैं. In that system, what was done? That proper land survey was done. The nature of soil was assessment was done. The nature of crop, इसको examine किया जाता था. Okay,
द नेचर ऑफ सॉइल क्वालिटी की ये फर्टाइल है कि सेमी फर्टाइल है और बैरन है, द नेचर ऑफ क्रॉप, ऑल दिस वेर एग्जामिन्ड, प्रॉपर सर्वे वॉज डन, एंड देन असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज डन. दिस वॉज ऑलरेडी डन इन इंडिया. ऐसा नहीं था कि यू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट वॉज कंप्लीटली न्यू. So here East India Company did what? They introduced this survey based mechanism. Okay, so read this. Survey based mechanism was introduced here. 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 Right, point 1, land survey was conducted. Land survey was conducted. Land survey was conducted. Right, point number 2, nature of soil was examined. Nature of soil was examined. Land survey was conducted. Nature of soil was examined. Okay, land survey was conducted. Nature of soil was examined. Okay, nature of crops were also examined. Nature of crops were also examined. And right, next point, and the assessment of land revenue or the estimation of land revenue was made based on these parameters. The estimation of land revenue was made based on these parameters. The estimation of land revenue was made based on these parameters. Got it? लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेशन का पैरामीटर क्या होगा? ये सारे पैरामीटर्स होंगे. बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज डन. ओके, अब बताओ, दिस मॉडल वाज ऑलरेडी इन इंडिया, तो हम तो इनहेरिटर ही कहेंगे ना. आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि और हम कौन सा मॉडल लाए, बट डोंट क्लेम दैट यू आर द इनोवेटर, यू आर द इनहेरिटर. ओके, दे इंट्रोड्यूस दिस मॉडल. ठीक है, बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम हियर? व्हाट ईआईसी ऑफिशियल्स विल डू? देखो, पीजेंट्स लिटरेट हैं कि इलिटरेट है? इलिटरेट. दे डोंट अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस. हम आज भी नहीं समझ पाते टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है पॉलिसीज की. Peasants also don't understand terms and conditions. So the EIC officials will do what? Over assessment of land revenue, over assessment of production. जैसे आपका क्रॉप से प्रोडक्शन अगर है ना 10 क्विंटल हो रहा है, so they will say that 15 quintals. Got it? If you are able to produce 100 kg, they will say that no, crop production will be 150 kg. So they will take land revenue on the basis of what? 150 kg na. So what they will do? Over assessment of production. And this will do what? Over assessment or overestimate of land revenue. Because the company want to gain more and more profits. And what will happen? Ultimate burden on peasants. तो रियलिटी देखो, आपने टेक्निकली क्या किया? 35, 40, 45% ऐसे लैंड रेवेन्यू अप्लाई किया. ओके, इन डिफरेंट एरियाज इट डिफर, बट एक्चुअलिटी द पीजेंट्स आर पेइंग हाउ मच? अगर ओवर असेसमेंट और ओवर एस्टिमेशन हो गया है तो 60 to 70% उनका लैंड रेवेन्यू चला जा रहा है. व्हाट विल हैपन? क्या वो एग्रीकल्चर करेंगे? नहीं, दे विल स्टार्ट लिविंग दिस ऑक्यूपेशन. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी. तो राइट दिस पॉइंट, प्रॉब्लम और चैलेंजेस. Problem or challenges. Problem or challenges. Problem or challenges. Point 1, read this. Over assessment of production. Over assessment of production. Now you can relate the points. कर सकते हो ना? Over assessment of production. Right. Point number 2. Over estimation of land revenue. Over assessment of production. Point number 2 is over assessment of land revenue. Over assessment of land revenue. And point number 3, right? Point number 3 is over assessment, over estimation, and point number 3 is right. Okay, iska outcome ho gaya, that is the outcome, that high land revenue rates. High land revenue rates. When you will combine all these three, what will happen? जितना टैक्स आप तय कर रहे हो, जितना रेंट कलेक्ट कर रहे हो, जितना रेवेन्यू क्लेम कर रहे हो, एक्चुअली यू आर कलेक्टिंग मोर देन दैट. ठीक है, सो रेट दिस अल्टीमेट बर्डन ऑन पीजेंट. सो हु इज द सफरर? Peasant class is the sufferer. And
कॉमन पॉइंट्स यू कैन राइट जो आपको पता है. पीजेंट क्लास विल बी सफरर. फोर्सफुल कलेक्शन होगा कि नहीं? यस. यूज ऑफ कोर्सिव मीन्स? यस. Peasants' savings will be declined. They will be not be able to manage 2 meals a day. They will do what? They will start living this occupation of agriculture. They will start fleeing their homes. They will start evicting their homes. They will start selling their lands. Land क्या बन जाएगा? Sellable commodity. ये भी तो है. If the peasant is unable to pay, so EIC officials came with an person. That person was money lender. कहते थे if you don't have the money, you can take loan and you can pay. Money lender can pay. और क्या होता था? Once you take the loan from the money lender will charge very high rate of interest. And the peasants were trapped in the vicious cycle of debt. They were never able to come out from this debt. एक बार अगर आप फंस गए तो फंस गए, उससे बाहर आप नहीं आ पाओगे. मेरी बात समझ गया ना? तो दिस इज व्हाट रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ सेटलमेंट. द इम्पैक्ट पॉइंट्स विल बी कॉमन. ठीक है, जो पहले बताया वही यहाँ भी आएगा. महालवारी में भी द सेम पॉइंट विल कम. बट दीज सिस्टम्स प्रूव्ड वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो अब आपको लग रहा है कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. दे आर trying to ensure their own economic gains. So in next class we'll discuss Mahalwari, then I will discuss other issues here, that how decline of handicraft, how industries declined, how forced commercialization of agriculture was promoted. Okay, I will discuss all this. Development of infrastructure was done. Okay, how financial institutions were developed during this time, and how early critics or early nationalists criticized the system of economic exploitation done by the British in India. This entire chapter is important. अच्छा, क्या ये केवल हमारे कोर्स के लिए important है और we should know this? वैसे भी जानना चाहिए, लग रहा है? Exactly. So when you will start understanding the theme, you will realize that we should know this, because at various times in your life, you are basically what? Adding something to your personality. कुछ ना कुछ अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर रहे हो. बट जब हमारे पास पढ़ने का सही तरीका नहीं होता है, तो बेसिकली वी आर नॉट एडिंग इन आवर पर्सनालिटी, वी आर एडिंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन आवर नो. जब आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, पॉलिटी की अच्छी होगी, सोसाइटी की अच्छी होगी, इन फ्यूचर यू आर राइटिंग एनी नॉवेल, तो आपके नॉवेल में वो रिफ्लेक्ट होगा. इन फ्यूचर यू आर अ फिल्म मेकर एंड यू आर मेकिंग फिल्म्स, है ना? तो आपकी फिल्म्स इंटेलेक्चुअल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएगी. मेरी बात समझ गया ना? इफ़ यू लेटर बिकम अ लीडर, so your speeches will be different from others. You will be able to hypnotize the masses. मेरी बात समझ गया ना? If you become actress, तो आलिया भट्ट से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग आपके पास होगा. मेरी बात समझ गया ना? तो जब हम कोई चीज़ ठीक से पढ़ते हैं तो उसका मतलब आलिया भट्ट ठीक तो है, अच्छी एक्ट्रेस है, बट देखो कभी कभी मतलब GS ठीक से पढ़ लिया होता तो इतनी कंट्रोवर्सी में नहीं आती. गॉट इट? चलिए, ओके. तो कोई क्वेश्चन है आपके पास? हैव एनी क्वेश्चन, हैव एनी डाउट? आकाश. देखो मैं तैयार हूँ, कैमरे पे मेरे सामने बैठना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? ओके, तो ठीक है ना? मैं कोई ऐसा मतलब मंडे वनडे से कुछ प्लान करता हूँ. 1.5 hour, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट. आर यू कंफर्टेबल इन दैट टाइम, 8:30 to 10 नाइट? चल जाएगा? अभी मतलब थोड़ा सा बर्डन आपका क्लास कुछ कम हो जाए तो देन थोड़ा सा मैं प्लान कर लूँगा. जैसे कुछ क्लासेस कम हो जाएगी ना, तो यू विल हैव सम टाइम. ओके, तो यू कैन एडजस्ट द थिंग्स. मेरी क्लास में हिस्ट्री में तो
there is no any problem of revising the things and either writing answer writing की भी जरूरत नहीं है. When you write the answer, your first answer will be the best answer without answer writing practice. I know this. ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी इसीलिए नहीं शेयर करता हूँ बिकॉज मुझे एक पूरा आंसर वाला सेशन भी लेके आना है. तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम थोड़ा फेज्ड वे में चलें. आकाश, जैसे मॉडर्न इंडिया हमने किया, ठीक है, तो हम या तो ऐसा कर लेते हैं कि एक हिस्ट्री का आंसर डिस्कशन सेशन रख लेते हैं. मेरी बात समझ गया ना? तो इससे क्या होगा, वी विल डिस्कस ऑल जीएस क्वेश्चंस पहले. तो जैसे ही जीएस प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर लेंगे. मतलब ये अलग बात है कि आप पढ़ रहे हो तो पहले भी आंसर डिस्कस कर लोगे, तो आप जब भी पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे. तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, सम स्टूडेंट, किसी ने भेजा था मुझे आंसर लिख के, तो आंसर वाज एक्सेलेंट, बट उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड हो सकती है. तो जब हम आंसर डिस्कस कर लेंगे फॉर द लास्ट 1995 टू 2024, एंशिएंट में कितने क्वेश्चन आए, मिडेवल में कितने क्वेश्चन आए, मॉडर्न में कितने क्वेश्चन आए, वर्ल्ड में कितने क्वेश्चन आए. तो जैसे ही आंसर डिस्कशन सेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप हिस्ट्री से तो मुक्त हो गए. मेरी बात समझ गया ना? क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यूज पे अच्छी कमांड होना और आंसर मॉडल सीखना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है हमारे एग्जाम का. तो वो हो जाएगा, ठीक है ना, राइट. दूसरी चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं लाइक पीवाईक्यू डिस्कशन और करंट अफेयर्स रिलेटेड थीम्स फ्रॉम हिस्ट्री, तो दैट विल बी बेटर कि हम उसको जैन या फेब में रखें. तो उसका फ़ायदा ये होगा एटलीस्ट जनवरी में दैट करंट के कई सारे थीम्स उसमें आ जाएंगे, एटलीस्ट जैन फेब तक आ जाएंगे. प्लस आपकी रीडिंग्स कंप्लीट होगी, तो व्हेन यू विल वॉच द पीवाईक्यूज वीडियो तो रिवाइज भी हो जाएगा. तो आपको फिर आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी. फिर इस टाइम के बाद जैसे 1.5 आवर का टाइम दे देते हैं, फिर जो सेगमेंट आपने बोला तो वी विल स्टार्ट दैट. ठीक है, उसको स्टार्ट करूँगा और तो फिनिश कर लेंगे. ठीक है ना? गॉट इट? ठीक है. तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे. ठीक है. सो दोज हु आर कंफर्टेबल एंड विल अटेंड द क्लासेस लाइव, आई नीड एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. ठीक है. इफ 5 स्टूडेंट्स आर देयर ऑन कैमरा तो आई कैन डू मिरेकल्स. ठीक है. मतलब देखो, दिखते तो 4-5 ही लोग हो मुझे स्क्रीन पे. ओके, सो इफ आई एम एबल टू इंटरेक्ट विथ एटलीस्ट 5, 5 पांडव चाहिए मुझे. ठीक है. सो आई कैन डू मिरेकल्स, महाभारत हो जाएगा. ठीक है, केवल 5 लोग चाहिए. ठीक है. तो यू विल सी द इम्पैक्ट इन द कमिंग मंथ्स और द ईयर्स. 1 ईयर तो लगेगा बट इट विल बी मिरेकल. ठीक है. ठीक है, धीरे धीरे चल रहा हूँ बट पूरी मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए शायद मैं बहुत कुछ अच्छा कर जाऊँ. तो आई नो दिस. ओके, तो 4 और 5 स्टूडेंट्स जब आप लोग रेडी टू अटेंड द क्लासेस रेगुलर, मैसेज कर दो, विल स्टार्ट. ठीक है. ओके, राइट. हाँ, tomorrow actually there are some pending tasks on Saturday and Sunday, so I will finish that. Okay, because this I all started in a very random manner. I decided there was no any plan for that, so just I am completing a few assignments, and once I complete I will be totally free. Okay, so we can do like this. Okay, so you will be ready to sit, we will discuss, and this is like self study. We are doing discussions, we are sharing the challenges which we are facing in the preparation and all this. So I think that we are going to learn a lot by this. ठीक है, टाइम भी अच्छा है. पहले मेंस की तरफ जा रहे हैं, फिर प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो होपफुली कुछ रिजल्ट्स भी हो जाएंगे शायद यहीं से. ठीक है ना? तो दिस विल एबल टू डू. ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.